So we are done with one other IELTS reality test at Jalandhar. I have a candidate who has just come out after giving her examination. Ma'am, what's your name? My name is Aarti Devi. My name is Girisha. My name is Pinku Kumar. My name is Sonali Sharma. Kuljeet Kaur. My name is Amandeep Kaur. And what's your name, dear? My name is Kulvinder Kaur. So both of you coming from which place? I'm from Jalandhar. You? I'm also from Jalandhar city. I'm from Hoshiarpur. I am from Ludhiana. I'm from Hoshiarpur. I come from a Noor Mahal. So very simple question. How was your overall experience after appearing into this IELTS reality test today? My overall experience is very good. I think this test is going to boost my confidence in the final exam. It was a very nice experience. Experience was brilliant. It was just great experience. The overall experience after appearing in this exam is really amazing. मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज मिली कि कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है और ये काफ़ी बेनिफिशियल है कैंडिडेट्स के लिए। फ्रेंड ने बोला था, मैंने तो बोला था कि मैं चलो पेपर दे देता हूँ, तो मैं तो उसके बाद तू ट्राई कर ले। मेरे को डर लग रहा था उस टाइम कि मतलब कि पेपर दूंगा कर मैं IELTS नंबर ना है, तो मेरे को डर बहुत था। फिर दोस्तों के बाद रियलिटी टेस्ट है तो ये ट्राई करके देख, तो इसमें किया, मेरा बिल्कुल डर हट गया, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। It was really a wonderful experience. Even all the staff members of Western Universities are really very cooperative, and it really gives us a feeling of that we are sitting in a real exam, and definitely it will boost our confidence level when we will going to sit in a real exam. So it is really helpful and great step by Western Universities. I was not thinking like these kind of facilities will be here, because I was thinking like if we are paying the less fees, there will be not much facilities which are mostly provided by the other institute. So the facilities are really good, and another thing is that the team was very cooperative. They cooperate us within each and every time. Also the test happened like in a very good manner, so that we can think the like a real exam will be going to same like this. I'll just come back to you because it's a time based process and बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टेस्ट है उसका एक स्टेज है कि इस समय पे ये हो जाएगा, उस समय पे हो जाएगा। क्या लगता है टाइम मैनेजमेंट फॉलो हुआ था? वेल एंड आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुई बिकॉज क्योंकि जितना हम सोच रहे थे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, इज़ मोर देन एक्सपेक्टेशंस। एंड ऑल्सो जो हम टाइम मैनेजमेंट्स के साथ चल रहे थे उसमें ये था कि हमको प्रेशराइज था कि हम अपना टास्क पूरा कर सकेंगे या फिर अपनी रीडिंग पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मतलब ये सारा सिस्टमेटिक वे के साथ था कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक मिनट भी हमारा वेस्ट किया है। Do you think we were able to create what we committed, the real exam environment? हाँ, the atmosphere was same ambience you people are providing, and you really stay on your words. Whatever you have committed, you really did it. The environment that we saw here, it was really amazing. Like all the staffs are like doing their work very quickly in a very clean manner, and another thing is that they are cooperating with each other. So I think Western Overseas will be like greatly can do this thing. Thanks for the appreciation, mate. Mock test का setup और इस setup में क्या compare करते हो? बहुत फ़र्क है। वहाँ पे हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं टाइम टू टाइम, बट यहाँ पर एकदम अलग सा एटमॉस्फेयर है जैसा कि रियल एग्ज़ाम में होता है। सो मैं बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ आफ्टर द एग्ज़ाम। टेस्ट इज़ अ सिंपल टेस्ट एंड लाइक अ क्लास टेस्ट। मॉक टेस्ट से ज़्यादा ये वाला टेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग लेते हैं। क्या लगता है ज़रूरी है कि ऐसा सेटअप में आके एक बार देख लें? बहुत ज़रूरी है कि मतलब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कैसे हमने पेपर का वो करना है, फेस करना है, क्या उस मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है। तो हर एक बच्चे को ये मैं रिकमेंड करूँगी कि ये एग्ज़ाम ज़रूर देखो, ये बहुत बेनिफिशियल होगा हर एक के लिए। First, I'll suggest everyone to try it once, as it will be helpful for them, and paying for 15,000 is a very much amount, and they must try it, and it is affordable, I think. When are you planning for your main exams? So for myself, I'm planning for April or in the first week of the May. Renu, first of all, thank you so much for your participation and feedbacks. Wishing you all the very best for your final testings. Thank you so much.